Today, I'm starting the chapter along with NCERT. आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था that our constitution provides us with some rights जो कि किसी भी कंट्री में रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और एल्स अगर आपके पास राइट्स नहीं है तो व्हाट विल हैपन इज कि इन केस यू नीड एनी हेल्प आपके खिलाफ किसी ने गलत कंप्लेंट कर दिया आपके लिए किसी ने गलत बोल दिया then you will not be able to get the justice. So let us start the chapter along with NCERT. So this is the यहाँ से स्टार्ट है तो उस दिन आपको मैंने बताया था that about 600 people were secretly picked up by the US forces from all over the world by the US forces and put in a prison in Guantanamo Bay, which is an area near Cuba. Cuba आपका नॉर्थ अमेरिका के पास है जिसको अमेरिकन नेवी जो है वो संभालता है. नाउ ये जो लेटर निकाला हुआ लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो उस वक्त जो वहाँ यूएस प्रेसिडेंट थे टोनी ब्लेयर उसको एक बच्चे ने लिखा है कि भाई मेरे फादर ने तो कुछ नहीं किया था तो व्हाई यू हैव पुट हिम इन द जेल. Anna's father Jamil in Bana was among them. The Americans said that they were enemies of US and linked to the attack on New York on 11 September 2001. As I told you that day कि ये एक ऐसा अटैक था. If you see on this Google or YouTube you will find how the World Trade Center of US was demolished or you can say destroyed by the forces of Al Qaeda. In most cases, the government of their countries were not asked or even informed about their imprisonment. मतलब जिस कंट्री के लोगों को पकड़ा गया था उस कंट्री को भी नहीं बताया. El Banah's family got to know that he was in the prison only through the media. Families of prisoners, media, even UN representatives, क्योंकि UN आपका जो है यूनाइटेड नेशन जो है उसका आपका CJI, देन आपका UN itself सिक्योरिटी फोर्स आपका पीस जो है वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए. The US Army arrested them, interrogated them and decided whether to keep them there or not. There was no trial before any magistrate in the US, nor these prisoners approached courts in their own country. ना तो उनके लिए कोई ट्रायल था. ट्रायल का मतलब होता है व्हेन यू आर अरेस्टिंग अ पर्सन यू नीड टू नोटिफाई एंड देन यू हैव टू आल्सो इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. इवन इफ इट इज अ सैटरडे और संडे आप घर जाकर परमिशन ले सकते हैं एंड देन यू कैन पुट. ऐसा कुछ नहीं हुआ. मतलब नो रूल्स वर फॉलोड. एमनेस्टी इंटरनेशनल आपके पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल. Amnesty International is a national human rights organization. यानी कि ह्यूमन राइट्स का मतलब है फूड, शेल्टर, गुड वाटर, ये सब हमारे लिए जरूरी है. एंड दिस NGO fights for these rights. They collected the information on the condition of the prisoners in the bay and reported the prisoners were being tortured in the ways that violated the US law. यहाँ तक कि उनका लॉ भी परमिट नहीं करता है जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया था. They were being denied the treatment that even prisoners of war must get as per international treaties. Many prisoners had tried protesting against these conditions by going on a hunger strike. Prisoners were not released even after they were officially declared not guilty. Even उन पर जब उनसे मतलब कि वो बाइज्जत बरी करना था तो भी उनको नहीं किया. An independent inquiry by the UN supported these findings. The UN secretary said prisoner in this Guantanamo Bay should be closed down.
लेकिन यूएस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इससे हमें क्या पता लगा? दैट वो जो प्रिजनर्स थे उनको कोई राइट नहीं था। नाउ लेट अस कम टू द केस ऑफ सऊदी अरेबिया। The case of Guantanamo Bay looks like an exception, for it involves government of one country denying the rights of citizens to another. अब सऊदी अरेबिया में अपने ही जो लोग हैं, वहां के खुद के लोग, द कंट्री इज रूल्ड बाय अ हेरिडिटरी किंग, वहां पर मोनार्की है, एंड द पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूल्स. The king selects the legislature as well as the executive. He appoints the judges and can change any of their decision. उन्होंने सुना भी दिया तो भी वो चेंज कर सकते. Citizens cannot form parties or political organizations, and media cannot report anything that monarch does not like. आपने सुना ही होगा, कोई भी आपने न्यूज़ उन लोगों के बारे में आप नहीं सुनोगे. आप यूएस के बारे में सुन सकते हो, यूके के बारे में सुन सकते हो, फ्रांस के बारे में सुनते हो, जर्मनी के बारे में सुनते हो, सऊदी के बारे में क्या सुनते हो? हाँ, मैं तो ये सुनती हूँ, सऊदी में जो राजा लोग होते हैं वो बड़े अमीर होते हैं, उनके घर में जो है शेर पाले जाते हैं. उनके घरों में, मतलब इफ यू जाते तो नहीं है, लेकिन अगर आप वहां जाओगे तो उनके घरों में भी शेर होते हैं. बट उसके अलावा वी डोंट नो. देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन. Every citizen is required to be Muslim. Non-Muslim residents can follow their religion in private, not in public. Women are subjected to many public restrictions. ये आपके तालिबान में भी है. अभी कल ही तालिबान में जो है, they have been given certain, women जो है उनको कुछ वो दे दिया गया है, आप ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, you will not do this. I was just reading one newspaper article. This is true not just. There are many countries where these conditions exist. जैसे मैंने आपको बताया तालिबान. तो इससे क्या पता लग रहा है? Even in countries like Saudi or Taliban, the people are not given any rights. और अगर उनको कुछ चाहिए तो they cannot raise their voices. Kosovo. As I said, Kosovo right now, Yugoslavia is not there. You might think that this is possible in an absolute monarchy, but not where the countries choose their rulers. क्या सिर्फ मोनार्की में ऐसा होता है? No. This was a province of Yugoslavia before it split. As I told you, now Yugoslavia is not there in the map of the world. In this province, the population was overwhelming ethnic Albanian. मतलब एथनिक मतलब जो वहीं के रहने वाले हैं, जो वहीं पैदा हुए, ओरिजिनली दे बिलोंग टू द. बट इन द एंटायर कंट्री सर्ब्स वर इन मेजॉरिटी. मतलब वहां दो तरीके की कम्युनिटी रहती है. एक है आपके सर्ब और दूसरे हैं आपके अल्बेनियंस. राइट? जो सर्ब्स है उनका जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है. Serbs were in majority. A narrow-minded Serb nationalist Milosevic, हम इसको Milosevic बोलते हैं, Milosevic, had won the election. His government was very hostile to Kosovo Albanians. जब कोसोवो जो मिलोशेविक दो है, when he came on power, वो चाहता था कि अल्बेनियंस को वहां से भगा दिया जाए. Many Serb leaders thought ethnic minorities like Albanians should either leave the country or accept the dominance of Serb. एक ऐसा ही केस था. 74-year-old Batisha Hoxha was sitting in her kitchen with her 77-year-old husband Izzat, staying warm by the stove. दोनों बैठे हुए थे. They had heard explosions but did not realize Serbian troops had already entered the town. The next thing she knew was 5 to 6 soldiers had burst through the front door and were demanding, "Where are your children?" They shot Izzat 3 times in the chest. वो आए और आकर उन्होंने सीधे गोली मार दी. देन उसके जो
वेडिंग रिंग था उसको भी उतार लिया. आई वॉज नॉट इवन आउटसाइड द गेट व्हेन दे बर्न द हाउस, और उसका घर जो है वो जला दिया. शी वॉज स्टैंडिंग She was standing on the street in the rain with no house, no husband, no possession but the clothes she was wearing. This news report was typical for what happened to thousands of Albanians in that period. Do you remember that this massacre was carried out by the army of their own country? मतलब ये एक देश में उन्हीं के आर्मी ने उन्हीं की कंट्री में रहने वालों के साथ ऐसा किया. This was one of the worst instances of killing based on ethnic prejudices. Ethnic मतलब जो वहां पे रहते हैं उनकी सोच में अलग रहना. ऐसा बेल्जियम में भी हुआ था, ऐसा श्रीलंका में भी हुआ था. बट बेल्जियम जो है दे हैड मतलब कि वेरी वेरी फाइनली दे अकोमोडेटेड. श्रीलंका में सिविल वॉर है जो आपका 10th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर है, उसमें आप पढ़ोगे. Finally, several other countries intervened to stop this massacre. Milosevic lost power and was tried by the ICJ for crimes against humanity. और बाद में क्या हुआ, उस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में he had to appear. तो ये जो हमने 3 स्टोरीज पढ़ी हैं, एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द स्टोरी ऑफ अदर कंट्रीज. Even in Pakistan, there are certain restrictions. In countries like Taliban, there are certain restrictions. तो ये जो सारी हमने स्टोरीज पढ़ी है, लाइक वी हैव स्टडीड अबाउट गिनन तिनबी, अब वहां पर देयर इज नो कंट्री बट जनरल ह्यूमन राइट्स. एक इंसान के सामने हमेशा एक जो है सही और गलत के लिए ही मस्ट हैव द चॉइस. आप किसी को जबरदस्ती जो है यू कैन नॉट आस्क टू ईट, स्लीप, ड्रिंक और वियर एनीथिंग ओनली बिकॉज यू वांट इट. In Saudi Arabia and countries like Saudi Arabia, you can find such restrictions on certain people. किसी में women के साथ, किसी जगह पर किसी particular community के साथ ऐसा होता है. Even in Pakistan, जो हमारा देश है, when it was divided, तो जो अभी आपका पाकिस्तान है, जो करंट पाकिस्तान है, इसको बोला जाता था वेस्ट पाकिस्तान. द एरियाज जो कि पंजाब, अमृतसर, लाहौर इनसे अलग हुआ था, इस एरिया को बोला जाता है वेस्ट पाकिस्तान जब 1947 में. और एक और हिस्सा था जो आपका कलकत्ता से अलग हुआ था और उसको बोला जाता था ईस्ट पाकिस्तान. और ये एरियाज वो थी जहां आपके मुस्लिम ज्यादा थे एज कंपेयर टू हिंदू. तो ये एरिया पाकिस्तान को चला गया. जो वेस्ट पाकिस्तान था जहां पर आपके जो है जिन्ना जी जो है ही वाज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने लिया. एंड ये जो ईस्ट पाकिस्तान था दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान. लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में आपके मैक्सिमम पीपल थे बांग्लास, मुस्लिम बांग्लादेशीज. एंड उन लोगों को जो है दे वर नॉट अलाउड टू कैरी आउट देयर ओन ट्रेडिशंस. उनको अपनी भाषा बोलने के लिए मना किया जाता था. एंड दैट इज व्हाई मुजबिल उर रहमान करके एक आदमी था जिसने 1970 में आवाज उठाया था. 1970 में, इवन दो उसकी जो पार्टी थी आवामी लीग, इट केम इनटू पावर, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने कहा हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, आप लोगों को हमारी बात माननी पड़ेगी. अल्टीमेटली देयर वाज अ वॉर लाइक सिचुएशन. एंड इंडिया, उस वक्त हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी मिसेस इंदिरा गांधी. उन्होंने इंटरफेयर किया, जबकि हम पड़ोसियों के अकॉर्डिंग टू हमारे पंचशील ट्रिटी हम पड़ोसियों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते. वी डोंट इंटरफेयर. Yet, Mrs. Indira Gandhi जो है, she interfered. There was a war between India and Pakistan. Pakistan had to surrender.
एंड वो जो ईस्ट पाकिस्तान था, टुडे इट इज कॉल्ड एज बांग्लादेश. अगर आप अपने सिटीजन्स को राइट्स नहीं दोगे तो ऐसी वॉर, ऐसी लड़ाई का जो है पूरे के पूरे चांसेस होते हैं. यूगोस्लेविया भी, अब तो इट इज नॉट यूगोस्लेविया, नाउ इट इज स्प्लिट इनटू 6 डिफरेंट कंट्रीज. चेगोस्लोवाकिया, चेक एंड स्लोवाकिया. तो if the people of a country are not given certain privileges, certain benefits, तो फिर क्या होता है, फिर उस कंट्री के अंदर वायलेंस होने के चांसेस होते हैं. So these are some of the examples that why do we need certain rights. So now the question comes, what are rights? हमने ये तो पढ़ा that ये जो कंट्रीज थी, ये जो एरियाज थे, यहाँ पर लोगों के पास कोई भी पावर नहीं था. Rights are the claims of a person over other fellow beings, over the society and over the government. All of us want to live happily without fear, without being subjected to degraded treatment. For this, we expect others to behave in such a way that does not harm us or hurt us. यानी कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए. Neither we should harm them in any manner, nor they should harm us. Physically, mentally, financially, any. Equally, our actions should not also harm or hurt others. So, a right is possible when you make a claim that is equally possible for others. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको दूसरों को परेशान करने का हक है, दूसरे को नहीं है, ऐसा नहीं होता. You cannot have a right to play a game in which it breaks the neighbor's window. The serves, अब आप बोलो मेरे को तो खेलने का हक है इसलिए मैंने तोड़ दिया तुम्हारा. नो, आप खेलो भाई, आप जाकर ग्राउंड में खेलो. The Serbs in Yugoslavia could not have claimed the whole country for themselves. The claim we should make be reasonable. They should be such that they could be made available to others in equal measures. यानी कि right comes with an obligation to respect other right. भाई अगर मेरे पास right है खेलने का तो दूसरे के पास right है आराम से रहने का. Just because we claim something, it does not become our right. It has to be recognized by the society we live in. सिर्फ मुझे चाहिए, मेरा हक है, नो. It has to be accepted. हर सोसाइटी में, हर घर के अंदर, हर फैमिली में, हर एरिया में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं. और हमें जो है what is recognized by the society as rightful becomes the basis of rights. That is why notion of rights changes from time to time and society to society. जैसे कुछ जगहों पे कुछ राइट्स है और कुछ जगहों पे कुछ राइट्स है. 200 years ago, anyone who said women should have right to women would have sounded strange. But today, not granting is strange. भाई उस वक्त का कई चीजें होती हैं. जैसे पुराने जमाने में हमारे बड़े लोग कहते हैं कि भाई हम जाकर नीम का जो है सीधा मतलब कि उठाते थे और दांतुन से हम लोग जो है खच 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 करते थे. आज आप मिट्टी वाले मतलब कि दांतुन को यूज कर सकते हो. यू हैव टू सी मेनी थिंग्स. जो पहले था वो अब नहीं है. सिमिलरली उस वक्त कुछ चीजें राइट थी, इस वक्त नहीं है. तो वी हैव टू सी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल. आप एक घर में रहते हो, एक सोसाइटी में रहते हो, एक फैमिली में रहते हो, एक एरिया में रहते हो, एक कंट्री में रहते हो. तो देयर आर डिफरेंट बाउंड्रीज एवरीवेयर. When the socially recognized claims are written into law, they acquire real force. Otherwise, they merely remain natural or moral rights. भाई अगर हम इसको लॉ बना देते हैं तो वो फिर लॉफुल राइट हो जाते. अदरवाइज आपके घर में भी राइट होंगे, आपकी सोसाइटी में भी होंगे.
आपके फैमिली में भी होगा, राइट? But when it is written by in the constitution, in the law, then it becomes democratic or constitutional rights. The prisoners in the Guantanamo Bay had moral claim not to be tortured or humiliated. लेकिन उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई डेमोक्रेटिक, कोई लॉफुल राइट नहीं था. When law recognizes some claims, they become enforceable. आप उस पे जबरदस्ती उसे फोर्स कर सकते हो, अदरवाइज मॉरल राइट का तो कोई मतलब नहीं बनता. When fellow citizens or government do not respect these rights, we call it violation or infringement. मतलब अगर कोई लॉ को फॉलो नहीं करता, राइट्स को फॉलो नहीं करता, तो हम उसको या तो वायलेशन बोलते हैं या इंफ्रिंजमेंट ऑफ अवर राइट्स बोलते हैं. In such circumstances, citizens can approach courts to protect their rights. If we want to call any claim a right, it has to be having three quality. First, it should be reasonable, it should be recognized by society and sanctioned by law. जैसे आप ये बोलो मुझे खेलना है, भाई खेलना आपका राइट है, लेकिन दूसरों को तंग करना है या दूसरों के सर को मार कर खेलना है, दैट इज नॉट योर राइट. सो दैट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी. व्हाई डू वी नीड? हमने अपनी इतनी सारी स्टोरीज पढ़ी. वी रेड द स्टोरी ऑफ कोसोवो, वी रेड द स्टोरी ऑफ सऊदी अरेबिया, ग्वांटानामो बे का हमने पढ़ा. देन आई टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान. Why? Rights are necessary for the very sustenance of the democracy. In a democracy, every citizen has to have the right to vote, right to be elected. ये हमारा political right है, क्योंकि democracy का पहला शर्त है government of the people, by the people and for the people. और इसके लिए जब तक आप सिटीजन्स को रोल नहीं दोगे, उन्हें इलेक्ट करने का राइट नहीं दोगे, उन्हें वोट करने का वोटिंग करने का राइट नहीं दोगे. For democratic elections to take place, it is necessary citizens should have the right to express their opinion, form political parties, and take political activities. Rights also perform a very special role in a democracy. It protects minorities from the oppression of majority. जैसे मैंने आपको उस दिन कहानी बताई थी, that in our country, I'm just talking about our country, this happens everywhere. You go to any country and you will find such people जिनका पॉपुलेशन कम है या वो गरीब है, और उसकी वजह से क्या होता है कि देयर राइट्स आर स्नैच्ड. आयरलैंड, आयरलैंड जो है आज इट इज पार्ट ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है. लेकिन आयरलैंड जब पार्ट नहीं था, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या थी? देयर वर टू काइंड्स ऑफ पीपल, Roman Catholics, and the second one were the Protestants. Now जो Protestants थे, they were rich, they were modern, and they wanted that the country should unite with United Kingdom, whereas जो Catholics थे, they were very poor, and they wanted Ireland should be an independent country for the Irish. लेकिन हुआ क्या? The British was rich, the Protestants were rich, और ये जो दूसरे थे ये माइनॉरिटीज में थे, और इसीलिए इनकी किसी भी बात को जो है they were not given any weightage. तो राइट वो होता है जहां मेजॉरिटी और माइनॉरिटी नहीं होता. मेजॉरिटी को माइनॉरिटीज के साथ रहना होता है. राइट्स they ensure majority cannot do whatever it likes. Rights are guarantees which can be used when things go wrong. Things may go wrong when some citizens may wish to take away the rights of others.
रिलीजन के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर, किसी भी नाम पर. This usually happens when those in majority want to dominate those in minority. The government should protect the citizens' right in such a situation. But sometimes the elected governments may not protect or may even attack the rights of their own citizens. कई बार वो देते ही नहीं है, जैसे हमने अभी यूगोस्लाविया में देखा. Similarly, in Sri Lanka, जो इंडियन तमिल्स हैं या श्रीलंकन तमिल्स हैं, दे डोंट हैव मेनी राइट्स. जबकि जो सिन्हालाज हैं, द ओरिजिनल श्रीलंकन हैं, दे हैव मेनी राइट्स. दैट इज व्हाई some rights need to be placed higher than the government. यानी कि गवर्नमेंट भी उसे वायलेट नहीं कर सकता है. उसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख देना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट भी उस राइट को वायलेट ना करे. तो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या राइट्स दिए हैं? In India, like most other democracies in the world, these rights are mentioned in the constitution. हमारे कुछ राइट्स हैं जो फंडामेंटल हैं, कुछ हमारे आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हम बोलते हैं, और कुछ को हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं. वी हैव डिफरेंट राइट्स. Some rights which are fundamental to our life are given special status, which are called as fundamental. ये हमारे प्रियम्बल में लिखे हुए हैं. And fundamental rights put promise into effect. Whereas आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो स्पेशल पर्पस में दिए जाते हैं, यू आर प्रोवाइडेड. एंड जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो गवर्नमेंट तब यूज करता है जब उसे किसी एक जगह पे किसी पर्टिकुलर चीज को लागू करना हो, टू प्रोवाइड वेलफेयर टू द पीपल. फर्स्ट राइट, अब जो हम पढ़ेंगे, एवरीथिंग इज इन डीप. राइट टू इक्वालिटी. The Constitution says the government shall not deny to any person in India equality before the law or equal protection of the law. उस दिन आपको मैंने बताया था कि जो आपकी कानून की जो देवी होती है वो अंधी होती है, उसके सर के आंखों में पट्टी होती है. तो द रीजन इज, कानून सबके लिए बराबर है. कानून किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर नहीं देखता. It means the laws apply in the same manner regardless of a person's status. This is called rule of law. ये पेपर में बहुत बार आता है, specifically in DAV. What is rule of law? Rule of law is the foundation of any democracy. Rule of law का मतलब है the rule which is applied by लॉ, जिसे हमने लॉ के अकॉर्डिंग लागू किया है. इट मीन्स नो पर्सन इज अबव लॉ. देयर कैन नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल और ऑर्डिनरी सिटीजन. ये आपको मैं बता चुकी हूँ. अगर आपने देखा हो तो हमारे जो कानून की देवी होती है उसके हाथ में तराजू होता है. मीन्स इट equalizes, balances, and it does not look at anyone. It is unbiased. Every citizen, from the prime minister to a small farmer in a remote village, is subjected to the same law. अगर क्राइम जो है इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, तो वो रिच आदमी हो या पुअर हो, सबके लिए सेम जाता है. We had many celebrities, those who had to spend time in the jail because the things were against them. No person can legally claim any special treatment or privilege just because he or she is important. For example, few years ago, a former prime minister of our country faced a court case on charging of cheating.
The court finally declared he was not guilty. But as long as the case continued, he had to go to the court, give evidence, file papers just like any other citizens. This basic position is further clarified in the Constitution by spelling out some implications of the right to equality. First, the government shall not discriminate against any citizens on the ground of any religion, race, caste, sex or place of birth. वो अलग बात है कि practically we do, but legally it is not allowed. Every citizen shall have access to public place like shops, restaurants, hotels, cinema halls, जो पहले allowed नहीं था. Certain sectors of our communities, of particular community, were not allowed. Some of the people were not allowed to enter into the temples, into they were not allowed to draw the wall, water from the well. In Bihar, Champaran, the Dalits were not allowed to draw water from the temple, from the well. Similarly, there were no restrictions with regard to use of well, tank, bathing, ghats, playground, places of public resort maintained by government or dedicated to use of general public. This might appear very obvious. आपके लिए तो बड़ा आसान रहेगा. But it was necessary to incorporate these rights in the constitution where traditional caste system did not allow people from some community to access from public place. अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे मैम इसमें क्या गलत है. ऐसा तो कुछ था ही नहीं क्योंकि आप रह रहे हो दिल्ली में. You are living in a world where you might not have seen such discriminations. बट अगर आप हमारे पुराने ओल्ड को जाओगे जहाँ ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम जो है इट हैड टॉर्चर्ड द पीपल हु बिलोंग टू सब कास्ट और लोअर कास्ट, तब आपको समझ आएगा कि ऐसा राइट क्यों जरूरी था. क्योंकि अगर ये राइट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होंगे ना तो लोग उन लोगों को आज भी अंदर नहीं आने देंगे. और अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि दीज राइट्स दीज मतलब कि थिंग्स आर नॉट वायलेटेड, ऐसा नहीं है. स्टिल वी डू इट. Still people practice it. They have these words, oh acha wo he belongs to this category aise karke, but that is wrong. Second is the same principle applies to the public jobs. All citizens have equality of opportunity in matters relating to employment or appointment to any position. पहले क्या होता था, जो लोग पढ़ाई कर सकते हैं वो थे ब्राह्मण्स. जो एक वेद पढ़ता था उसको हम वेदी बोलते थे. जिसने 2 वेद की कला को हासिल किया द्विवेदी, फिर 3 है तो त्रिवेदी और 4 किया तो चतुर्वेदी, द हाईएस्ट पोर्शंस. एंड जो लोग क्षत्रिय होते थे दे वर अलाउड टू टेक द वेपन्स, बाकी नहीं कर सकते थे. बट अब ऐसा नहीं है. जिसको मिलिट्री में जाना वो मिलिट्री में जाए, जिसको एजुकेशन में जाना वो एजुकेशन में जाए. नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और मेड इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन द मिशन. हम लोगों ने पढ़ा था इन आई थिंक इसमें सेकेंड या थर्ड चैप्टर में दैट 27% इज रिजर्व फॉर द ओबीसीज एंड देयर आर सम रिजर्वेशंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब. तो क्यों है? वैसे देखा जाए तो दिस इज रॉन्ग. रिजर्वेशन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो कहूंगी कि भाई सबसे पहले रिजर्वेशन को हटाओ. बिकॉज रिजर्वेशन की वजह से जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है. बहुत नहीं होती है, मतलब हद से ज्यादा होती है. माई ओन डॉटर, आई हैव शी अपीयर्ड फॉर हर मेडिकल्स, शी अपीयर्ड फॉर हर मतलब उसके वो शी वाज इन द टॉप मोस्ट. इस पोजीशन में मतलब टॉप मोस्ट तो बहुत बड़ी बात हो जाती है. No doubt she got into the very second best college of India. First was Manipal, second was D.Y. Patil, third was but उसके marks के लिए she should have got into any government college. But she got highest marks, but yet general category होने की वजह से
those who belong to other categories were given the privileges. और ये बहुत दुख होता है कि आप इतने टॉप लेवल पर आकर यू आर नॉट एबल टू सिक्योर अ गुड सीट फॉर यू. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग थोड़ा सा बैकवर्ड जाते हैं तो हमें ये भी समझ आता है कि एक टाइम हम लोगों ने भी उनके साथ ऐसा ही किया. द पीपल हु बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स or the backward classes, they were not allowed to acquire education. अब political equality, economical equality देने के लिए the government has introduced the reservation system. Various governments have different schemes of giving preference to women, poor or physical handicapped in some kind of jobs. Are these reservation against right to equality? No. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. This is because it is equal treatment to all. Equality means giving everyone an equal opportunity. जब हमने पहले उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दी है तो अब हम उन्हें स्पेशल अपॉर्चुनिटी देकर उनको ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज व्हाट जॉब रिजर्वेशंस डू. दैट इज Constitution says reservation of this kind are not violation to right to equality. The principle of non discrimination extends to social life as well. जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर अनटचेबिलिटी इज अ कर्स एंड इट क्लियरली डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू पुट एन एंड. तो कैसे करें अनटचेबिलिटी को? तो मतलब कि वैसे तो इट इज कंडेम्ड. जहां डज नॉट मीन ओनली रिफ्यूजल टू टच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट, इट ऑल्सो रिफर्स टू एनी बिलीफ और सोशल practice which looks down upon the people on account of their birth with certain caste labels. Such practices denies them interaction with other, access to public places as equal citizens. So the constitution made untouchability a punishable offense. अगर आज की डेट पर कोई untouchability को practice करता है and if you give this to others, अगर आप किसी को बताते हो, so then what will happen is you will be punished. वो अलग बात है कि till date जो लोग हैं वो इस चीज को फॉलो करते हैं. See, this is ये जो बॉक्स बना है many forms of untouchability, इसमें देखिए. P. Sainath wrote a series of news reports in the Hindu. He traveled to different parts of the country and found tea stalls, two kinds of cup, one for the Dalit and one for others. This is very common. Barbers refused to serve Dalit clients. Dalit students were made to sit separately in the classroom or drink water from separate pitcher. If you read the autobiography of Dr. Ambedkar, you will find it. Dalit grooms were not allowed to ride a horse in the wedding procession. They were not allowed to use a common hand pump. अभी भी बहुत सारे जगहों पर आता है. अगर आप न्यूज को रेगुलरली फॉलो करोगे तो यू विल फाइंड दीज काइंड्स ऑफ. अभी रिसेंटली हुआ था इन राजस्थान. दिस वाज इन राजस्थान की एक दलित बच्चा था, उसके टीचर ने उसको इतना मारा था, शायद वो बच्चे की जान चली गई थी, कुछ ऐसा हो गया था, just because the child belonged to Dalit category. And my question to all of them is, you are not living in 1940s, you are living in 2022. No doubt there are some inequalities among us, लेकिन अच्छा बुरा, let everyone have the access. जिसको जितना स्मार्टनेस है उसको कमाने दो. अगर हम ऐसा देखें तो why do we go and watch a movie of a particular star जो कि he doesn't belong to our caste? क्यों जाते हैं हम? Why can you go to a doctor and कहे डॉक्टर आप ब्राह्मण है तो ही मैं आपसे पूछ मतलब कि I can get you the treatment? No, we go to a doctor if he or she is good.
Each one of us praised Dr. Abdul Kalam for his humble nature. तो जब हम इस एरिया में रह रहे हैं, 2022 में रहते हैं, जहाँ we are living, I think I have, मतलब कि I have faced these operations, मतलब देखा मैंने, because I'm, as I told you, we belong to the highest caste of Brahmins. But I've seen in my family ki they say, oh my God, wo matlab ki they are, they are from this lower caste. But when we need who comes to you, वो हमें देखना चाहिए. Not caste, but people. I do not know whom I am teaching. I do not know what is the name of the child. I know it is the child's name is this, the child's name is this. मुझे नहीं पता उसका उसके father क्या करते हैं, उसकी मतलब की mother क्या करती है. I know that they are humble, they are good to me. When I was having my institute itself, I used to have hundreds of students. Abhi to this is the worst year when I don't have the students. Otherwise, in my SST batch, I used to have 110 students. And I never knew who were who. We are living in a complex world. But आज भी अगर आप न्यूज को देखोगे तो you will find such news. And still we need to implement right to equality in better manner. The second one is, which we will do today, is right to freedom. Now, freedom का मतलब क्या है? आजादी means absence of interference in our affairs by others, anyone, even government. We want to live in society, but we want to free. मतलब हम जैसा चाहते हैं, हम थोड़ा अपने हिसाब से रहें. No one should dictate us. तो जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसमें आपका जो क्वेश्चन आता वो आता है, फ्रीडम टू राइट इज अ क्लस्टर ऑफ राइट्स. मतलब उसमें अलग अलग है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एक, मतलब कि फ्रीडम जो है वो एक नहीं है. फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज देयर. मींस if you want to raise your voice against anyone in a polite manner, you can raise. Assemble in a peaceful manner. आपको violent नहीं होना चाहिए. You form associations. मिलजुल कर किसी बात को लड़ना हो, यूनियन फॉर्म करिए. Like in the companies, you have the labor unions. You have the freedom to freely move throughout the country. There is no restriction कि आप इस एरिया को नहीं एंटर कर सकते हो, आप इस एरिया को नहीं कर सकते हो. You can live, you can practice any profession, but it should be legal. That means you should remember every citizen has a right to all these freedoms. That means you cannot exercise your freedom in such a way that violates others' right. It should not be a public nuisance or disorder. You are free to do everything, but it should not injure others. हाँ भाई, मुझे तो प्रोटेस्ट करने का फ्रीडम है, इसलिए मैं तोड़फोड़ कर रहा हूँ. No. Freedom is not unlimited license to do what you want. According to government, it can impose certain reasonable restrictions on our freedoms in the larger interest. For example, हमारे यहाँ पर एक राइट है, मतलब गवर्नमेंट के पास एक वो है, एंड वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन. Preventive detention. Now, what is the meaning of preventive detention? Means अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई ग्रुप, कोई इंसान जो है वो अपने फ्रीडम के नाम पर ही और शी इज गोइंग टू बिकम वायलेंट, he or she is going to break the law, then under preventive detention they can take the persons into custody. वो उन इंसानों को कस्टडी में ले सकते हैं. तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे वो करो. इट शुड बी विद इन द लिमिट्स. द वेरी फर्स्ट इज स्पीच एंड एक्सप्रेशन.
Means our ideas and personality develop only when we are able to freely communicate. You may think differently from others, definitely. मेरी सोच जो है, अगर आप मेरी सोच को किसी भी कभी भी किसी से लोगे ना, तो आपको लगेगा कि आई एम एन एलियन. मुझे खुद को लगता है आई एम एन एलियन. मैं बिल्कुल अलग हूँ. आई थिंक दैट मुझ जैसा इंसान दोबारा पैदा भी नहीं हो सकता. आई एम सो एलियनेटेड फ्रॉम एवरीवन. आई डोंट वांट टू टॉक. आई फील दैट यस ठीक है. हाँ, पढ़ाई है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछोगे, आई एम वेरी हैप्पी. गॉसिप से रिलेटेड पूछोगे, आई एम नॉट. बट इट इज नॉट दैट कि मैं ऐसी हूँ तो दुनिया ऐसी होगी. नो, नॉट एट ऑल. It's not like that. Even in a family will not be like that. I may like a movie which you may not like. I may like a person whom you may not like. I may like a law which government has made, but you may not like it. So we have the freedom to express our views in that way. Even if 100 people think in one way, you should have the freedom to think differently and express your views. जैसे मैंने आपको बोला. You may disagree with a policy of government or activities of an association. You are free to criticize the government or the activities of the association in your conversation with parents, friends, and relatives, through pamphlets, through magazines, through painting, poetry. But you cannot use this freedom to instigate violence. You cannot use it to incite people to rebel against the government. आप बोलो, आप अपनी बात को रखो कि भाई मैं इस बात से सहमत नहीं हूं. बट इट डजंट मीन दैट आप सहमत नहीं हो तो आप दूसरों को भड़का रहे हो. ठीक है, एवरीवन हैज देयर ओन. देखिए, एक घर के अंदर चार दरवाजे हैं. इवन विद इन योर फैमिली, you and your mother or you and your brother may not be having the same, because this is a very common thing. तो आप बोलो, आप अपनी बात को एक्सप्रेस करो, बताओ. बट इट शुड नॉट बी दैट आप दूसरों को भड़का रहे हो. चलो, neither can you use it to defame others by saying false and mean things that cause damage to a person's reputation. ये बड़ा ही पीछे, मतलब कि there was a lot of hues and cry about this. आप किसी के जो उसका जो एक सोसाइटी में एक वो बनाओ, उसके खिलाफ आपको गलत बात नहीं बोलनी चाहिए. Citizens have the right to hold meetings, processions, rallies, and demonstrations. Yes, if we want to discuss a problem, we want people should support us. आपने देखा होगा ना, हमारी मांगे पूरी करो. आप करो, आप मीटिंग करो, लोगों को बुलाओ. But these meetings should be peaceful. They should not lead to public disorder or breach of peace in society. मतलब आप झगड़े नहीं करवा सकते हो, मारा पीटी नहीं करवा सकते हो. They should not carry weapons with them. That is what I said, कि there are some rules and then the government can use a preventive detention अगर उनको लगता है तो. Citizens can also form associations, like workers can form workers union. Some people in the town form an association or to campaign against others. करो आप, but in a proper, peaceful manner, without hurting the sentiments of others. As citizens, अभी पीछे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मतलब एक्सप्रेशन है, इस पर काफी चर्चे हुए थे while we are making the movies and all. तो कई बार क्या होता है, a particular community, a particular person is shown in a wrong manner. तो if these things are taken to the court, stay order लग जाता है. As citizens, जैसे जब वो जोधा अकबर आई थी, देन पद्मावत आई थी, तो पद्मावत का जो ओरिजिनल नाम था वो पद्मावती था.
बट द पीपल सेड दैट ऑन इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप हमारी क्वीन को गलत नहीं दिखाओगे, तो फिर उसको थोड़ा चेंज किया गया, फिर उसमें ऐड किया गया दैट दीज आर फिक्टिशियस कैरेक्टर्स करके ऐड किया गया। तो डेफिनेटली आपके पास पूरा है, आप हिस्ट्री को री इंटरप्रेट करो बट प्रेजेंट इट इन द राइट मैनर, say the right words, do not blame others, do not defame others, बिना पूरे सच को जाने किसी के बारे में कोई कमेंट मत करो। थर्ड, as citizens we have the right to travel to any part of the country, there is no restriction। आप दिल्ली में हो, tomorrow you want to start a business in Hyderabad, go and start there। You want to start a business in Assam, you go and start। You may not be having any connection but you can even go, you have the setup। This right allows lakhs of people to migrate from villages to towns and poor regions to prosperous region and big city। You have the right to choose your occupation, no one can force you to do or not to do certain job। Women cannot be told that some kinds of occupations are not there for them, बोला जाता that this is not your occupation, but that's a family, circumstances, and that has to be dealt with the family law, but not at the government level। गवर्नमेंट नहीं बोल सकता कि दिस इज नॉट फॉर वुमेन। इनफैक्ट इसके ऊपर एनडीए के ऊपर जो है, मतलब नेशनल डिफेंस में देवर लेस वुमेन थे, बट नाउ द गवर्नमेंट अंडर दिस freedom they have given, people from deprived caste cannot be kept to their traditional occupations। मतलब पहले ये होता था ना कि भाई ये लोग जो कि बिलोंग करते हैं दिस कास्ट को, तो ये स्वीपर्स ही होंगे, ये मतलब अब ऐसा नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज that no person can be deprived of his life or personal liberty except by the procedure established by law। मतलब no person can be killed unless the court has ordered a death sentence। जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, पुलिस ऑफिसर आता है या अजय देवगन आता है, ठुस 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 मारता है ना, इट इज unethical, unlawful। It also means a government or a police officer cannot arrest or detain any citizen unless and until he has proper legal justification। उसे पहले कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता, अरेस्ट वारंट लेना पड़ता, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता, उसके बाद ही कैन। एंड इवन व्हेन देयर इज अ टेररिस्ट एनकाउंटर द पर्सन हैव टू प्रेजेंट, अदरवाइज उनके जो वेपन्स होते हैं उसको ले लिया जाता। फर्स्ट, even when they do they have some procedure। first, a person who is arrested, ये पूरा 3 marks में आया था, a person who is arrested and detained in custody will have to be informed of the reason for such arrest and detention। A person who is arrested and detained shall be produced before the nearest magistrate within 24 hours of arrest। And such a person has the right to consult a lawyer or engage a lawyer for his defense। आप ये नहीं बोल सकते कि आप लॉ नहीं कर सकते। जैसे ग्वांतानामो बे और कोसोवो में क्या था, वहां पर ये पर्सनल लिबर्टीज नहीं दी गई थी। So this cannot be done। The next is right against exploitation। आपके जो right against exploitation है, इसके अंदर हमारे 3 आते हैं। That is आपका जो बेगारी है, forced labor है और child labor है। As I told you that there are many cases जहां पर छोटे बच्चे जो होते हैं they are either they are sold या फिर they are employed in the areas like bangle making factories, then आपका जो brick making factory, then सबसे ज्यादा आपके जो होते हैं वो होते हैं आपके फायर क्रैकर्स में। in fact there were so many deaths in शिवगासी, जहाँ पे ये जो छोटे बच्चे होते थे जो पटाखे बनाते हैं, हम लोग तो पटाखों को 1 मिनट में फोड़ते हैं, but they are exposed to toxic fumes, केमिकल फ्यूम्स, जिसकी वजह से उनको स्किन डिजीज, कैंसर, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा ऐसी बीमारी।
Once the right to liberty and equality is granted, it is followed that right not to be exploited. क्योंकि हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी के नाम पे, कास्ट के नाम पर, देन मनी के नाम पर एक्सप्लॉइट किया जाता है. The Constitution mentions three specific evils. The very first is traffic in human beings. Now, what is human trafficking? ये वो ट्रैफिक नहीं है जो आप बाहर देखते हो. मीन्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स. कई बार होता है इन मेनी ऑफ द सिटीज, जो विमेन होती है ना, उनको उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं होता है, तो जो रईस लोग होते हैं वो उनको खरीद लेते हैं और अपने घर में जो है स्लेव्स बना के रखते हैं. और दे आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज जहाँ पे दीज विमेन हैव टू वर्क लाइक बेगर्स. देन बच्चों को जो है खरीदा बेचा जाता है, and then they are put into begging. Second, our constitution also prohibits forced labor or begar in any form. बेगार मतलब जहां आप सर्विस देते हो फ्री ऑफ चार्ज टू सम अदर, अपने घर में नहीं. When this practice takes place on a lifelong, it is called as bonded labor. Finally, the constitution also prohibits child labor. और चाइल्ड लेबर इज वेरी रैम्पेंट. घरों के अंदर द चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड बिकॉज हमें उन्हें कम पैसा देना पड़ता है, उनको हम मार पीट कर उनसे काम करवा लेते हैं. No one can employ a child below the age of 14 to work in any factory or mine or in any hazardous work such as railway ports. Using this as base, many laws have been made to prohibit children from working in industries such as beedi making, firecracker, matches, printing, and dyeing. Yet, this practice is very common. If you see around you in the dhabas, in the restaurants, you will find such people who are employing the children, which is really immoral. I had one child, Naman Nahata. So once I was teaching this chapter to him. वो दो बच्चे थे, हर्ष नहाटा and नमन नहाटा. They were very 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 ultra rich people. तो उनके घर में ना एक छोटा सा मतलब कि काम करने वाला लड़का था. And that child would come along with Naman and Harsh to drop him in the school. और वो बेचारा इनका बैग उठा के लेकर आता था. तो एक बार ऐसे ही मैं पढ़ा रही थी, तो I was telling these things to them. तो नमन स्टूडेंट ही आस्क्ड मी कि मैम सचमुच में ये गलत होता है. तो आई सेड यस. छोटा बच्चा था, तो ही वेरी इनोसेंटली सेड टू मी, लेकिन मैम हमारे घर में तो ऐसा ही होता है. तो आई सेड दैट इज रॉन्ग. इवन योर फैमिली शुड नॉट डू इट. देन अनदर डे, इट वाज ओनली 2 or 3 days बैक हुआ, he came to me and he told me कि मैम आपको पता है क्या हुआ. मैंने कहा क्या हुआ. मतलब he was absent for 2 or 3 days. फिर वो आया और उसने मुझे बोला कि मैम मेरे को ना मंकी ने काट लिया. तो आई सेड ओ माय गॉड. तो डिड यू हैव द वैक्सीन एंड ऑल. ही सेड यस मैम, मेरा तो वैक्सीन लग गया था, लेकिन जो हमारा नौकर था ना उसको भी मंकी ने काटा था, लेकिन मम्मी ने ना उसको वैक्सीन नहीं लगवाया. इट वाज सो फनी फॉर मी, क्योंकि उस बच्चे ने आके खुद अपने घर की गलती मुझे बताई. देन आई टोल्ड नो बेटा दिस इज रॉन्ग. उसने घर जाके शायद अपनी मम्मी को बोला होगा. देन हिज मदर केम अप. शी वाज वेरी नाइस लेडी, बहुत अच्छी थी. तो शी सेड मैम he told me like this. So I said yeah, this is wrong. Then they said ma'am from now onwards, because मेरे बच्चे जो हैं they should not be taught anything wrong. हम इस बच्चे को गांव भेज देंगे, or if he wants to study we would make him study and we would not make him work anything. And really they did it. So there are people जो understand करते हैं इन बातों को. Child labor is nothing but it is an evil. वो हमारे लिए भी बहुत गलत बात है. अगर हम कहीं देखते हैं कि भाई चाइल्ड लेबर है, मैंने उस दिन आपको वो एग्जाम्पल दिया था, दैट पंडेर का दिया था, द पर्सन हु यूज्ड टू ईट पीपल. वो बच्चों को खा जाता था. ह्यूमन ट्रैफिकिंग. it was an example of human trafficking. It's a very
सीरियस अफेयर था. तो ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, these are called as exploitation. And we are all humans, so we must not exploit others just because they are rich, they are poor. और अभी आज के ही पेपर में था about some celebrity who had, exploited his or her maid servant or something like that. That's wrong. Just because we have minted some money, that doesn't mean we should exploit others. तो ये हमारे राइट्स थे. पहला राइट हमने आज पढ़ा इक्वालिटी. इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी या फिर प्रैक्टिस. राइट. फिर हमने पढ़ा फ्रीडम. फ्रीडम में हमने पढ़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट हमने पढ़ा, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन. फिर हमने पढ़ा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन. राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंदर हमने पढ़ा बेगारी, child labor and human trafficking. So these are the rights which we have done today. In our next class, we would be doing freedom of religion, then freedom socio, then how can we secure these rights? That is आपका right to, ये बहुत मतलब कि बड़ा right है, which is right to constitutional remedies, cultural and educational rights, and then how we can expand these rights. So this is what we call as democratic rights.